Hi all, this is Manisha Narang and welcome back to Leverage IELTS, brought to you by Leverage Edu, your trusted study abroad expert. Tell me honestly, हम सबको कभी ना कभी नेटिव स्पीकर्स के वे ऑफ स्पीच और प्रोनाउंसिएशन से फैसिनेशन तो हुआ ही होगा, है ना? So now is the time to get that in your way of talking too. And of course, IELTS speaking section में proper pronunciation important है. 25% of your score depends on it yaar. Today, we are going to discuss how you can speak English well, just like a native speaker. See, there are 3 levels of pronunciation. First is basic, wherein you are able to speak with the right grammar, you use basic vocabulary, and you are able to have basic simple conversations. Then comes the next level, which is fluent, wherein you are 75% fluent in the language, you are able to use the language subconsciously, and you are comfortable in communicating in that language. And then the last level is mastery, where most of the vocabulary is well known to you. You are able to use very complex sentences and are very much comfortable with the language. If you want to score 7+ in IELTS, you should fall in the middle, and there are simple techniques through which you will be able to achieve that level. Let's begin with some amazing tips to easily improve your spoken English. Tip number 1. Use connected speech. Connect the 2 simultaneous words when they are starting with consonants. Consonant is a speech sound of alphabets other than the vowels like B, C, Z, T, etc. Let's see an example. Black, coffee. Native speakers do not say this as 2 individual words, black, coffee. वो इन दोनों के बीच में कॉमन साउंड करने वाले अल्फाबेट को साथ में बोलते हैं, like black coffee. Now, if a word is ending with a consonant and the other word is starting with a vowel sound, we will roll the consonant sound into the vowel. थोड़ा confusing लगा? Let me make it easier for you. How do you say not at all? Well, saying this as not at all sounds right. But does it sound natural? Maybe not that much. So, we will roll out the T into A, not at. And then we will roll out the next T into the third word, which is not at all. Good day. We can say this as good day. Only one sound of D, but longer. My next tip is squeeze the words. How do you say this word? Comfortable. Comfortable. Well, let's squeeze this. Comfortable. Not comfortable. Okay? Let's take this every. It can be said as every. A more squeezed and natural sounding version. Vegetable. Vegetable. No. Try this way. Vegetable. Perfect. The third tip is use shadowing technique. Well, I know very well that you all love watching Netflix. So why not put in a little more extra effort and learn from it? Shadowing technique basically एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम सुनकर किसी चीज़ को exactly उसी तरीके से कॉपी करते हैं. जैसे अगर हम Netflix, YouTube पर कोई भी इंग्लिश कंटेंट देखें तो ट्राई कर सकते हैं कि जैसे वो वर्ड्स प्रोनाउंस कर रहे हैं हम भी एग्जैक्टली वैसे ही उनको कॉपी करने का ट्राई करें. नेक्स्ट स्टेप इज टू स्ट्रेस द सिलेबल्स इन द राइट वे. Syllables are basically a part of a word that contains a single vowel sound and that is pronounced as a unit. So, for example, book has 1 syllable and reading has 2 syllables. For example, calendar. अब इस word को हम 3 parts में divide करते हैं. Calendar. Okay?
टू साउंड परफेक्ट हमें ये देखना है कि किस वर्ड पर स्ट्रेस देने की हमारी प्रोनाउंसिएशन सही होगी. So the correct part is ca. We say it as calendar. Now, the question is, how do we know how many syllables are there in a word? Well, there is a trick for that. Place your hand flat under your chin. Say a word और देखिए कि कितनी बार आपकी चिन आपके हैंड को टच कर रही है. For example, let's pick a word, guarantee. Now place your hand and check how many times your hand is touching your chin. Guarantee. 3 times. The right syllable here to put pressure on is the last one. तो हम इसे pronounce करेंगे as guarantee. Learn sentence stress. पहले हम बात कर रहे थे कि कैसे वर्ड्स में राइट सिलेबल पर ज़्यादा स्ट्रेस देके बोलना है. अब हम बात करेंगे कि कैसे सेंटेंसेस में राइट वर्ड्स पर स्ट्रेस देना चाहिए. इससे आप नेचुरल ही नहीं पर काफ़ी फ्लुएंट भी साउंड करते हैं. लेट्स ट्राई दिस सेंटेंस. While I am a passionate basketball fan, I prefer to play football on weekends. When I am saying this sentence, बहुत easily समझ आ रहा है कि मैं अपनी बात के थ्रू I am and I पर लिसनर का ज़्यादा फोकस लाना चाह रही हूँ. तो जनरली हम एडजेक्टिव्स, नाउन्स एंड वर्ब्स पर स्ट्रेस देके बोलते हैं, या ऐसे वर्ड्स जिन पर हम लिसनर की थोड़ी ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करना चाहते हो. एंड ऑल्सो दिस क्रिएट्स अ रिदम इन आवर सेंटेंसेस जिससे इवेंचुअली हम ज़्यादा नेचुरल साउंड करते हैं. My last tip is to align your hand gestures and expressions with your sentences. अगर आप किसी से बात कर रहे हैं and the other person बस एक पोकर फेस बना के एक ही एक्सप्रेशन में बात कर रहा है तो थोड़ा वियर्ड लगेगा ना. ऐसा लगता है कि वो हमारी कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड ही नहीं है, या कहीं हम कुछ गलत तो नहीं बोल रहे. सिमिलरली IELTS में भी लाइक नेटिव स्पीकर्स एक्सप्रेसिव होके नहीं बोलेंगे तो वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगेगा. सो always use your facial expressions and hand gestures to communicate well. तो गाइज, अगर आप इन टिप्स को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि आपकी स्पोकन इंग्लिश में बहुत इंप्रूवमेंट होगी और आपका IELTS स्कोर और इंक्रीज हो जाएगा. और पता है क्या? To keep a check on your improvement, record yourself and listen to your voice. Talk to others, your friends, your family maybe. Remember, dedicated practice is your best friend if you want to sound like a native speaker. तो इन टिप्स को यूज करें और एक मंथ from whenever you watch this video, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी इम्प्रूवमेंट सबके साथ जरूर शेयर करें. That's all for this lesson, folks. So with this, let's start your IELTS journey together. Stay tuned for more content and don't forget to like, share and subscribe. Hit the bell icon to make sure you are notified of all the upcoming videos.